Good evening, ladies and gentlemen. Since your hostess took a little bit of time to join me on stage, she offered me to offer a few words in the beginning. First of all, I would like to thank the brand Economic Times for doing this fantastic gathering of iconic brands. Everyone in this room have their own USP. They are all brands in their own way. We're going to see a few of them, a few iconic brands of the entertainment and other industries here on stage in a little while. And the last thing that you want anyone to do in a function where brands are being iconic brands are being respected and honored is a long speech about what brands are, because the people sitting in front are the ones who actually created those brands. So the last thing you want to hear is something to do with brands from me. It's a great experience for me to be part of the central government, which is obviously under the leadership of Honorable Prime Minister, trying to push the Make in India initiative. And let me tell you that we are doing pretty well in terms of foreign direct investment, which is almost about 5,000 crores. 5,000 crores in US dollars. That is what has been touched in April 2018. We are encouraging people to make those things, make things in India. If you could do it in China, in other parts of the world, then why not do it in India? And that will provide a lot of employment and everything to all, to 125, 130 billion people that we have in India. Now, the dream often meets a question whether India is too big to dream big, or is it too, is the dream too small for such a huge country with 130 billion people. But I think that we have a government, or it's not a political point that I'm making. It's just the fact that we have a government which is pushing this initiative with all kinds of incentives that are being given to the exporters who would want to export and produce more in India and then take it to the foreign countries. So it's a great opportunity to interact with the iconic brands of India, the people who have been brands. I think that we have all learned in school that everyone is born with a gift. Many do not open the gift to see whether they are gifted enough. So I think people who have made a name for themselves, they've all started at nouns, they have worked towards becoming a proper noun, and then at the end of it, if they're really good brands, then they are used as proper nouns in English sentences. So I'm sure that the brands that are going to get felicitated today are the ones who are proper nouns, like लोग काजोल जी की तरह एक्टिंग करते हैं, सुभाष घाई की तरह शोमैन है, और कौन है, मेरी बेटी की तरह बदमाश है, अभी छोटी है, मैंने बोला था उसका मेंशन एक बार करूँगा स्टेज पे, काफ़ी सफ़ेद एक कपड़ा पहन के आई है और मुझे बोला था डैडी प्लीज डोंट एम्बैरेस मी ऑन स्टेज, सो आई हैड टू डू दिस फॉर हर. I get a few chances to come to Bombay, but thank you so much once again for making me the chief guest, whatever that title is, for this evening. But whenever I go as the youngest guy from the ministry, from the government, whenever I go, I throw myself a kiss as a brand and tell myself that whenever you go for a speech, KISS means keep it short, stupid. So I hope I have lived up to my expectations for myself. So thank you so much once again, ladies and gentlemen. Really an absolute honor to all of you. Thank you.
Yes, ladies and gentlemen, that was Kajol winning the iconic powerhouse performer of Bollywood. With that, let's move forward, ladies and gentlemen. So he gave us a Khalnayak for every hero, but he also gave for none other than Subhash Ghai. That a brand that you really launched to India, someone who actually grew as a brand because of you, is getting launched today once again. Sanju is getting launched today. So a big round of applause goes to him because he actually helped his brand grow. And his elder brother, so many films, Jackie Saab is also there. So an extra round of applause for him. Sorry, I couldn't resist him. Thank you so much. And moving forward. Next up, ladies and gentlemen, so if there's one man, and of course all of us would agree with this, if there's one man who can tie that bandana, as you can all see right now, and carry it off with an elan on a lovely white shirt, and walk in with style and steal the thunder, he can be a Jagu Dada in one frame and also be a Jackie Shroff in the same frame. Ladies and gentlemen, the style icon of Bollywood, none other than Jackie Shroff. Thank you so much, sir. Thank you. Absolute pleasure. And now, ladies and gentlemen, so she came from a small village in Andhra Pradesh. A 12-year-old, that is from a 12-year-old in a small village, she transformed into an Iron Lady, the Shiromani Awardee, Arjuna Awardee, the first woman in Indian history to win the Olympic medal, 2000 Sydney Olympic bronze medalist. Ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than Honorable Padma Shri Kanna Maneshwari. Pleasure and honor to have all of you here. Thank you so much. And with that, ladies and gentlemen, we continue with the felicitation, of course, for the icon of indigenous excellence for the brands coming up. So yes, let's get this rolling and let's get this started. The first brand. Yes, before we go further,
मैम लुक मैम मैम दिस वन मैम लुक हियर काजल मैम लुक हियर प्लीज ओके काजल जी कांग्रेचुलेशन थैंक यू so much. परफॉर्मेंस प्लीज साइलेंस प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट के लिए क्या फील करती हैं आप ऐसे मौके पर जब बहुत ही अच्छा लगता है ऑब्वियसली, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको सराहते हैं, जब कोई ऐसा अवार्ड मिलता है आपको, तो येस इट इज़ दैट प्लेजर, इट इज़ अ हाई। और जब कोई आपको आइकॉनिक ब्रांड बुलाए तो और भी अच्छा लगता है कि यू नो यू हैव बीन चोजन एंड दैट योर यू नो वन ऑफ द highest chosen people, and yes, it's a very very amazing feeling. Thank you. एंड जब आप अपनी जर्नी देखती हैं इस तरह की, पिछली अगर फिल्मों की बात करें बैक टू बैक हिट रही है, तो उस तरह की इस सारे मोमेंट को क्या फील करती हैं आप इन सारी चीज़ों को देखकर? यही सोचती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मैंने कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा और मेरी चॉइसेस डेफिनेटली सही थी। और इन हाइंडसाइट, जैसे कहते हैं हाइंडसाइट इज़ 20/20, सबको लगता है कि पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि यू नो कि हाँ अरे मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, लेकिन आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगर मैं वापस जाती तो क्या अलग करती। तो जो मैंने किया है मेरी ज़िंदगी में, मैं बहुत खुश हूँ उससे, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड टू सी दैट इट्स ऑल वर्कड आउट फॉर मी। काजल जी, ढेरों सारी बायोपिक बन रही है जी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, लोग पसंद भी कर रहे हैं जी। आप ऐसा चाहती हैं कि कभी काजल जी मेरे ऊपर नहीं, आई डोंट थिंक दैट आई डोंट वांट एनीबडी टू मेक अ बायोपिक ऑन मी। आई थिंक आई एम लिविंग माई लाइफ द वे आई वांट टू, एंड आई एम लिविंग माई ओन बायोपिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू। ओके दादा, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिला है, क्या फील करते हैं आप आज भी? जो आपका गेटअप है काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी स्टाइलिश है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप आज की शाम के बारे में? पहले तो मुबारक आप लोगों को, आप इकोनॉमिक टाइम्स का ये जो अवार्ड है दूसरा साल है। बाकी कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इस अवार्ड का हकदार हूँ, और बस शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिनके दिल में इतना प्यार और ऐसी बातें हैं मेरे लिए। बाकी क्या बोलूँ बिड़ू, देने उनका दिल कर रहा है, देने का दे रहे। ओके, तो आज के गेटअप के बारे में? गेटअप अभी शूटिंग से जा रहा हूँ, शूटिंग डिफरेंट है ये छोटे, ये बहुत सालों से यहाँ नया कुछ नहीं है, तो मैं हमेशा रखता हूँ छोटे। कल पैदा हुआ क्या बे? तो हम ऐसा माने कि ये सब रीज़न है जिसकी वजह से क्या खुदा जाने, मैंने आया कि तू कुछ भी पैंट काला तू भी पहनता है, सफ़ेद शर्ट भी पहनता है, रुमाल भी लगाता है, सब वही छे बिड़ो। अपने आप को पेश कैसा करता है उसके ऊपर है। नाखून साफ रख, कोशिश कर नाखून साफ रख, स्टाइल है तू भाई, तेरे नग साफ है तो समझा कि नहीं, तेरे सॉक्स साफ है क्या भाई, वो सब चेक कर लेने का। किसकी इज्जत करता, औरतों की इज्जत कर, जब रोड क्रॉस करता है कि पुराने तो उनको क्रॉस करा, स्कूटर रुका, ये सारी चीज़ें स्टाइल है भाई। लोगों को इज्जत देना स्टाइल बोलते हैं। कपड़ा ही पहनना थोड़ी स्टाइल होता है बिड़ो, वरना क्या बोलता हूँ, किसी और को भी मिल जाता। सबकी कदर कर, सबकी इज्जत कर, अपने आप को साफ रख, अपने दिल को साफ रख, बाकी समझे। एंड इसके अलावा एक आखिरी सवाल, जो नए एक्टर आ रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं, लाइक आपके बेटे की बात करूँ या कई वरुण की बात करूँ, इससे मानते कि सबसे ज़्यादा स्टाइलिश कौन है प्रेजेंट टाइम में, जो बहुत ही अच्छा कर रहा है और काफ़ी स्टाइलिश भी आपके अंदाज में, जो अपने नाखून साफ रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छी फिल्में देते हैं, जैसा कि आपने कहा? मैं बाकी लोगों को इतने नज़दीक से गौर से नहीं देखा हूँ, अपने बच्चे को देखा हूँ, क्योंकि बाकी के बच्चों के साथ मैं कहाँ उठना बैठना और सोना रहेगा भाई। सबके अपने अपने ना। तो मेरा उसको देखा हूँ अब तक, तो फिलहाल सही चल रहा है, सही टाइम पे सोता है, वर्जिश करता है, प्राणायाम करता है, अपने काम पे ध्यान रखता है, लोगों की इज्जत करता है, चल रहा है अब तक। बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है भाई। उनकी सारी फिल्में बैक टू बैक हिट हो रही है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी कर रहे हैं, तो हाँ इंशाल्लाह। मैं अभी
अरे कोई एग्ज़ाम में पास होता है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो कैसा लगता है रे बाप को?